No, I want to go across to Karuna Nandi, because if this had been an isolated mindset, Karuna, you could have dismissed it. But there are way too many people who agree with what Omji is saying and they support it. They think, why are you standing up for women? If you're going out at this hour, I've heard over the past week as we put out a series of stories, so many men in our newsroom and elsewhere come up to me and say, ये आप अबू आजमी से ऐसे क्यों पूछ रहे थे? अबू आजमी तो ठीक ही कर रहे थे. वो कह रहे थे कि लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए इतनी देर रात. If you go out at night, and there are women who've said this to me as well. Women who've come up and said, you can stay away from trouble. Why do you need to go to a place like this? Not restricted to men at all. Karuna, one second. आप उनकी तो सुनिए ना सर. आप उनकी तो सुनिए. The thing is that when somebody is driving around in a Lamborghini, right, or if somebody has a lot of money and their money is stolen, nobody blames them for, having the money, or nobody blames them for not hiding the money. People blame the thief, right? When you attack a woman, all these questions come in, and there are all these, various levels and shrouds of patriarchy. Sometimes and very frequently they're veiled in religion, right? Now the thing is that on the micro level, given the complete breakdown of people like this gentleman, who purport to lead religions, given these ridiculous ideas कि हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारी देवियाँ हैं, which is all rubbish, At the end of the day, he can think whatever he wants. He must understand, and others must understand, that women are citizens like him. नागरिक हैं औरतें, नागरिक हैं महिलाएं, बिल्कुल आपके जैसे आपको ये लोभ आता है अगर कोई कामिनी आपके सामने हो, तो फिर ऐसे ही women have sexual desires. Let him understand that. बिग बॉस के घर में मुझे all of this is based on only on consent. करने का बहुत प्रयास किया गया उन लड़कियों द्वारा. एक बात जो आपको बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, साफ समझनी चाहिए कि आप पूजें, आप ना पूजें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है. बस आप और आपके चेले बस एक बात साफ समझें कि अगर कोई नागरिक, महिला या पुरुष आपके सामने है और आपने उनको छुआ तक बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनकी परमिशन के, और मैं आपको चीज बता दूं, आप हैं यदि ऐसा कहीं होता है, आप ये इतनी छोटी सी बात आप समझ लें, इतना ही काफी रहेगा. ऐसे असॉल्ट करते हैं, हम फिजिकल असॉल्ट करते हैं. जनाब, पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना. पहले आप लड़कियों को लेक्चर दे रहे हैं, फिर आप पिटाई की बात कर रहे हैं. पुलिस यदि नहीं करती है, यहाँ की भारत की पुलिस की क्या स्थिति आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. हम ऐसे लोगों को दंडित करते हैं, दंड देने का प्रावधान है. और ये कानून आपको पुलिस की वर्दी पहना के टोपी देते, डंडा देते, आप ही चलाइए अपना डंडा. कमजोर होगी तो नागरिक का भी कर्तव्य बनता है ना. पुलिस कमजोर है तो नागरिक का कर्तव्य बनता है. यदि पुलिस इतने स्ट्रांग होती तो इन बेटियों के साथ में ये सब नहीं होता. और मुश्किल ये है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि हर कदम में पुलिस को खड़ा Rupu Sharma wants to come in. I'm also out of time, so I need final comments. Prevent करें. On a very serious note, Rahul, I want to make it very clear that none of these self-proclaimed dhongi priests, Maulvis and Babas, like the one we see on your channel right now, are the pallbearers of anything, and nor are they above the law. And this should be made absolutely clear. It should be made absolutely clear to them that they do not decide what is right and what is not right in this country. Fortunately enough for us. And I'm sorry, मुझे नहीं पता इनकी क्या सीख है, ना इन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता है, ना इन्हें हमारे देश के बारे में कुछ पता है, और इन्होंने एक बारी भी इस देश के मर्दों को ये नहीं बात बोला. आपको क्या प्रॉब्लम है अगर कोई पीता भी है तो? मालूम है कि क्लबों से रात में निकलती है, मुझे ये मालूम है कि मौत से. आप स्वामी जी भी नहीं है, आप ढोंगी बाबा है. नहीं, ये मैं लड़कियों के लिए मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए इतना खतरनाक मैं स्टेटमेंट दे सकता था कि आप यहीं पर आप विचलित हो जाती. लेकिन लड़कियों का मैं सम्मान करता हूँ, आपको मैं अपना बेटी मानता हूँ, इसीलिए इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा. लेकिन मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं भारतीय परंपरा का पोषक हूँ, और यदि भारतीय परंपरा का पोषक ढोंगी होता है तो मैं इस बात का गर्व है. Rahul, he dare not threaten me. You do it right now. I'll file a case against you. Of course, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? I am threatening that lady who is supporting the wrong thing. Yes, I am threatening. हिम्मत है तो बोलो. Yes, I am threatening. बोलो, इस देश की सारी महिला खड़ी है आपके खिलाफ. बोलो, अपना मुंह खोल के बोलो. No, I am threatening. मैं कमेंट नहीं करना चाहता. You're a ढोंगी. You're a ढोंगी. लड़की ये है इस देश का ढोंगी बाबा. मेरी बेटी की तरफ से मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ. आप बोलो तो सही, हिम्मत है तो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या आप पागल हो जाते क्या बोल रहे हो?
बोलो ना, हिम्मत है तो बोलो। इसीलिए हिम्मत तो है, लेकिन मैं नारी भक्त हूँ। बोलो क्या हिम्मत है, बोलो ना। बहुत है। स्वामी ओम जी गब्बर शेर है, अरे बोलो ना। स्वामी ओम जी गब्बर शेर है, लेकिन मैं अपने बेटियों की निंदा नहीं करता। अरे ढोंगी बाबा, मैं आपकी तरह नारियों के लिए अब शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, आप अपने पिता को यदि आप शब्द से सुशोभित कर रही है तो ये आपकी बात है, ये मेरी परंपरा नहीं है। Yes, I am threatening. You are supporting the wrong thing. Yes, I am threatening. You are supporting the wrong thing, Nupur. अरे बोलो ना। You are supporting the wrong thing. Yes. Okay. Be an Indian. Don't follow the क्या बताओ? one second. Yes. One What second. are you going Please, to do? please, I please. openly This is challenge you. the What are last you thing going I to want do? on the newsroom. This is not What how are we you run our going to show. do? One second. I want final words from Karuna Nandi. I'm out of time. Karuna, how do we fight back? How do we fight this mindset? You know, you'll always have people like this. No. It is centrally government's responsibility to change this kind of ridiculous nonsense. It is centrally government's responsibility. Because by the time an attack happens, by the time a rape happens, by the time an assault happens, yes, there is justice to be done after. But the greatest justice is to be done prior. हैरानी And है to कि change these mindsets सलमान खान ने कहा is था the central कि जब मैं government, where the पुतला BJP कहता था is, तो the मैं state ऐसे होता government, where था, the Congress जैसे is. बलात्कार The पीड़ित Congress होती है, signed up तब to the आपने manifesto विरोध and नहीं नहीं, किया। विरोध किया। there आपको किसी बात में विरोध नहीं किया। mindset. तब भी हमने विरोध किया। Indian women have the rights, complete नहीं, rights. गलत नुपुर ने नहीं किया, उसमें करुणा ने And नहीं if this किया। gentleman had been educated in a इनके school किसी where नारी he संस्था had ने had इतना बड़ा रैली नहीं classes निकाला, on तो what मैंने a निकाला man था। is and what a woman is, and classes on this sort of thing, perhaps he would not have emerged in the state he has ये emerged. बात बोलता है। So I do think there's a lot of evidence. Advaita, I want to make a final word campaigns, before I end. There's lots of Advaita. evidence in school things, and that's what needs to be implemented by government. Advaita. मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आप सुरक्षा की प्रभु, व्यवस्था उसको बोलने करें, दीजिए। लेकिन परिजन भी सुरक्षा करें। उनको बोलने दीजिए, अद्वैता। I think, Rahul, this is a very, very serious issue. Unfortunately, people like उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। Swami Om unfortunately trivialize it, and I think it has to be taken very seriously. We see this happening everywhere. We see it happening all too often. And really, I mean, there are some very decisive steps that governments need to take. We are no more than just campaign slogans for them when it comes to women's safety, especially. You know, I mean, where is the talk when it comes to CCTV coverage? Where is the talk when it comes to, you know, things like just getting out a sexual offenders register, for example, which impacts you know, which impacts employment opportunities, other kinds of services. If we're going with Aadhaar and we're going into all kinds of ID and proofing, then why not a sexual registry, you know, offenders registry? We need these kind of systems in place. We need a mass movement across the country, across party lines. Okay. I think Final women have words, a greater Nupur Sharma. ability to collaborate. Final words, Nupur. I support it. You know, Rahul, it is but obvious from your show that a very sick and crude mentality of patriarchy exists, where a man has the audacity to threaten a woman on live television. I'm sorry, this is the time for the country to come together and diss this kind of mentality, and I will not absolve any political leader. It is our responsibility to ensure that the law is implemented. You know, I'm going to end it over here. This is very, very unfortunate. But it also reflects the mindset that exists. You can't wish this away as the rantings of one person. It reflects a deeply pervasive mindset. That mindset needs to be fought. You can't blame women. It's the men whose mindset needs to be fixed. Until the time that happens, these instances will keep happening, which is why the law may have changed, but the rapes continue because the mindset hasn't changed. I'm going to end it here. Karuna Nandi, Advaita Khala, Nupur Sharma for joining me on the newsroom tonight. Thank you very much. Om ji, thank you. Thank you. आप लेक्चर मत दीजिए लड़कियों को, आप उनको जो करना है उनको करने दीजिए। आप लेक्चर देना, आप लड़कों को लेक्चर दीजिए। एंड में लेक्चर को लेक्चर दीजिए, लड़कियों को मत बोलिए, लड़कों को बोलिए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भारत की नारियां हमारी माताएं हैं, आप उनको हमारे शास्त्र में लिखा है, उनको मां समझ करके आप उनकी इज्जत कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। ये हमारी परंपरा है। और यदि कोई उनको रहने दीजिए, ये बोलिए, उनको रहने दीजिए, उनको जो करना है उनको करने दीजिए। नो मीन्स नो, बोल दीजिए नो मीन्स नो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बलात्कार करें, छेड़ें, मोलेस्ट करें, ये गलत है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा
हमारी जो ओम जी बलात्कार पीड़िता महासंघ है, हम उसको घर पे जाकर के हमला करेंगे और हम कर रहे हैं, भले ही पुलिस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई